जय जगन्नाथ एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू समस्त को ओपीएससी प्रीलिम्स अल्प दिन रहा राइट। तो जिते आम एमसीक्यू एवं सल्व कर बहुत बढ़िया रही आज वेल एंड आज जो आम जोग्राफी काफी आम जोग्राफी देखी देयर वुड बी नो मोर ऑफ जोग्राफी सेशन जे एमसीक्यू रे आपण मानकर आउ किछि सेमती जोग्राफी सेशन आउ नेबी नाही ना आई विल हैव एनवायरनमेंट साइंस टेक वाला जो पार्ट रही आपंकर we will go through that part the environment and science take वाला part को हमें कवर करें बिकॉज जोग्राफी में ऑलमोस्ट काफी लेक्चर्स हमें देखीचे राइट। तो आज जो सेशन रहिबो आपनकर एनवायरनमेंट ऊपर सेशन रहिबो। गुड इवनिंग टू एवरीवन सोनू समीर एसएस सस्मिता एवरीवन। चलो फिर तो आज सेशन को हमें स्टार्ट करें। वी विल हैव 30 क्वेश्चंस रहिबो। द 30 क्वेश्चंस द क्वेश्चंस आर जनरली बेस्ड ऑन पोल्यूशन एंड वाइल्ड लाइफ रही कारण ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो जदि आपने क्वेश्चंस देखिथिबे द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जदि देखिथिबे लास्टली दे हैव बीन आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द पोल्यूटेंट पोल्यूशंस वाला 100% क्वेश्चन रहबा पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट ऊपर जो क्वेश्चन ता 100% थाए राइट। शत्रु आल्सो देयर। चलो फिर गुड इवनिंग टू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 2.5 pollutants. It can be penetrated through the deep through the lungs and enters to the bloodstreams. It is mainly produced from the natural sources like the sea spray and also harmful than the PM, that is what 10. Now you have to pick the answer. Right. Good evening everyone. Ajit also. Sukhoi kebe kebe asi janti. Good evening Susri Shangita as well. चलो स्टार्ट करो। Sikha also there. Good evening everyone. तो ऑप्शन नंबर जदि आम देखा क्वेश्चन नंबर समस्त जमती आम देखा फास्ट क्वेश्चन जो आंसर आसूची मते मु देखि पारुची सस्मिता इज गोइंग फॉर दैट इज द शत्रु इज गोइंग फॉर बी सनु प्रसाद इज गोइंग फॉर 1 and 3 डी कहूची समीर कृष्णा पंडा इज गोइंग फॉर एंड थवीरा महाकुंड आल्सो गोइंग फॉर लिटिल आल्सो देयर। ओके बहुत बढ़िया। तो देखो द फास्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट समझते जानते कि PM2.5 is smaller than the PM10. That is why it can penetrate deep into the lungs and bloodstream रे जाइकी कैंसर कॉज करि पारे इवन आमे कहबा ब्लॉकेज बध्य करि पारे डिफरेंट आस्थमा रिलेटेड बामे रेस्पिरेशन रिलेटेड डिजीजेस करि पारिबो। इट इज मेनली लिखिछि इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। लेट्स से आमर जेते वेहिकुलर एमिशन हेगला बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कथा नहीं जाओ थर्मल पावर प्लांट कथा नहीं जाओ सीमेंट इंडस्ट्री कथा नहीं जाओ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कथा नहीं जाओ ये सब आसी था। दिस इज नॉट मेनली बिकॉज ऑफ द सी स्प्रे सो दैट इज वाई ऑप्शन 2 इज गलत एंड 1 and 3 सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी जदि आम देखा समीर कहूँ बी शिखा कहूँ बी एंड सस्मिता लिखुची के सोर्स इज इंडस्ट्रियल कंबशन पावर प्लांट स्पेशली पावर प्लांट। देख ये जो पॉल्यूशन वाला मु आउ थे कहूँ बारंबार कहूँ एथरू प्रत्येक वर्ष एमती लास्ट 10 वर्ष ओपीएससी हो कि यूपीएससी कौन सी प्रिलिम्स है जो थे पॉल्यूशन रु क्वेश्चन ना प्रत्येक वर्ष पॉल्यूशन रु गोटे क्वेश्चन आसो दैट इज द पैटर्न ऑफ आस्किंग द प्रिलिम क्वेश्चन तेणु करी तुम मान को सेटा करिया पड़िबो राइट। बायोमास बर्निंग्स वगैरह जमती तुम लेट से आम स्टबल बर्निंग कथा नहीं जाओ दैट कुड बी। चलो now we will come to the second वाला क्वेश्चन। now the national air जोटा कि हमें ambient quality जोटा आसला 2009 रे the criteria of the pollutants एथिरे किए नाही माने किए अछि से कुछ which of the following are classified as the criteria of pollutants under the India's NAAQS NAQS। दीपिका ऑल्सो जॉइनिंग मी दीपिका लिंका ये भी मध्य बहुत दिन पर आसचंती।
राइट चलो फिर देखियो देखि दियो फटाफट दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 देख ये सबूर तुमको टेलीग्राम रे मिल जाव अगेन आई रिपीट करूची ये सब तुमको टेलीग्राम रे मिल जाव राइट ठीक अच्छे ये सब तुमको टेलीग्राम रे मिल जाव जहाँ मु तुमको देखौची ये सबूर जो पीडीएफ सब तुमको टेलीग्राम से मुझे अपडेट कर दिए अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम चैनल हूँ कौन ओएस मेंटर कौन ओएस मेंटर राइट चलो ताले हम देखा अगेन बी इज द ट्रेंडिंग आंसर जदि हम देखा बी दीपिका लेंका इज गोइंग फॉर द बी समीर इज what Samir is saying B Sikha is going for B Krishna Panda is going for A बाकी शत्रु सनु सुश्री सुखोई everybody is going for the B trending शुभकांत कोची A and Sasmita Misra also joining me ये भी मझे कोड गायब होते 2-3 दिन थवीरा also joining me right तो चलो फिर देखिए हमें which is the following is the correct answer से कोई ना देखो sulfur dioxide ammonia is there then Benjamin is and methane. Methane is a GAG, that is the greenhouse gas, but not coming under the NAC. Not coming under the NAC. Under the NAC जदि मु कहिबी गुड इवनिंग एवरीवन जोटा हमर कहूचे 2009 रे जोटा आसदेला जोटा हम कहूचे एथरे कोन कोन रही छि NAC रे देखो PM 2.5 PM 2.10 रही छि NO2 रही छि SO2 रही छि CO रही छि O3 रही छि NS3 that means ammonia रही छि बेंजीन रही छि आर्सेनिक रही लीड रही निकेल रही एंड बेंजोपायरिन रही सो दीज आर द गैसेस रही जोटा मु तुमको सुनेली दीज आर द गैसेस राइट नॉट मीथेन बहुत बढ़िया लिटिल लिखी ए एंड सस्मिता मेंशन नॉट मीथेन सो ये जो 3टा गैसेस रही तो ध्यान से मन रखो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट के पॉल्यूटेंट जोटा रही तुम प्रत्येक वर्ष पचारूँ खास कर थर्मल पावर प्लांट रू जो जेनरेट होची पॉल्यूटेंट गुड़ा ना केतरो से फ्लाई एश को नहीं पचारूँ केतरो से सिंग गैस को नहीं पचारूँ केतरो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं पचारूँ एसिड रेन तो 1000 थर बहुत थर पचार सारे एसिड रेन ओजोन को नहीं पचारूँ तेणु करके कहब कि मीथेन इज ए जीएजी ये हूँ ग्रीन हाउस गैसेस बट दिस इज नॉट कमिंग अंडर द NAC 2009 अंडर आसुनी but all this 3 is coming that means A B C is the correct answer तो तुमको कौन करिया पड़िबो देखो एई भले जो रहिबो तो तुमको कह जो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सो 3 इज करेक्ट आजिकली जो ऑप्शन दउची यूपीएससी आ ए बी सी करिक त दउनी से कह ये थ्रू केतेटा करेक्ट 2 ऑप्शन आर करेक्ट 3 ऑप्शन आर करेक्ट एंड ऑल आर करेक्ट राइट गुड इवनिंग प्रकाश शकुंतला आल्सो जॉइनिंग मी राइट सो दैट इज व्हाई तो आंसर जदि हम देखा ए बी सी सो आंसर वुड बी व्हाट ए बी सी तो आंसर कौन रहिबो ए बी सी देखो एठी जदि मु तको मल्टीपल ऑप्शन करिवि ना सेथरे तुमको ए बी सी न देकी एबे कनति पचारुछंती ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट 3 आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट एमती पचारिबो राइट तो सेटा तुम सेही भळे आंसर दबो नाउ कम्स टू द एथरे हम देखले मु गैसेस गुडा तुमनको पढी के सुनी देली राइट नाउ आई विल कम्स टू द थर्ड नंबर क्वेश्चंस which pollutant contributes the acid deposition this is very important mo dekho keteta whether 2 are correct option rahibo a b c a b c d a b हे परिबो c d हे परिबो मो ऑप्शन नाही there is no option तमे देखि कहबो whether it is a c whether that is a b whether that is all 2 नहले एमती भी कहि परो के सर 2 ऑप्शन आर करेक्ट 3 ऑप्शन आर करेक्ट ओनली 1 इज करेक्ट बस जोडे कहि परिबो ट्राई कर देखिबो एसिड डिपोजिशन का द्वारा होची एटा बहुत थरा ए क्वेश्चन आसीची बहुत थरा ए क्वेश्चन आसीची यूपीएससी रो फेवरेट क्वेश्चंस यदि तुम माने देखि थिबो शायद यूपीएससी रो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस अगेन आई रिपीट यूपीएससी रो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एंड द खास क्वेश्चन यूपीएससी सबले पचारे राइट क्वेश्चन नंबर 3 SO2 NO2 से सबुले पचारुची राइट तो कंफ्यूज हबार नहीं हाँ ताले हाउ मेनी ऑप्शन इज करेक्ट 2 आर करेक्ट 3 आर करेक्ट 1 इज करेक्ट ऑल इज करेक्ट सेमती कहबो नहले जदि केही चाहिबो कि जने की कहबो कि सर मु ए बी अनुसार कहबी ए बी करेक्ट ए सी करेक्ट बी सी करेक्ट कोटा को तो ए बी जदि हम कहबा शत्रु लिखुची ए बी सी कहउची लिटिल
Prakash is going for A, Susri is going for the only 2. वाह देखो एथर मु गोटे टेक्निक तुमको सिखाउछि सुनो जेतरा चारटा ऑप्शन थिबो ना मैक्सिमम टाइम ओनली 2 विल बी करेक्ट, ओनली 2 विल बी करेक्ट। ये टेक्निक मन रखिबो, ओनली 2 विल बी करेक्ट, मैक्सिमम टाइम ओनली 2 विल बी करेक्ट 90%। आ जदि मु तीनटा ऑप्शन देबी गोटे को हटै देबी ताहले तमे ओनली 1 विल बी करेक्ट, एटा मन रखो। तो एटा गोटे टेक्निक ता थाए। तो 2 आर करेक्ट, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत थोड़ा क्वेश्चन पचारछि यूपीएससी रो फेवरेट एरिया, राइट। तो ओजोन तो जानछ तमे, ओजोन इज व्हाट अपर एटमॉस्फेरिक फॉर्मेशन। ओजोन पुनी दी प्रकार थाए, O3 जदि हम कहबा ग्राउंड ओजोन गोटे थाए, एटमॉस्फेरिक ओजोन गोटे थाए, दीटा थाए। ओजोन लेयर आल्सो देयर 15 रु 35 किलोमीटर जो आमे देखिबा दैट इज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। ओजोन लेयर इज व्हाट रेस्पोंसिबल फॉर द राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड आल्सो टू प्रिवेंट द दैट इज यूवीज रेज। याको आमे देखि परिबा। गुड इवनिंग मुदुली। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा। एबे बुझी परिबो एमिथि ही ऑप्शन तुमको आंसर दवा को पड़िबो। नाउ स्टॉकहोम कन्वेंशन, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, बहुत थोड़ा कहिछि स्टॉकहोम कन्वेंशन वेरी इंपोर्टेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन POPs दैट इज द pollutant of persistent, pollutant of persistent जे एनवायरनमेंट रे बहुत समय जाय रही परिबो, बायो accumulation बायो मैग्निफिकेशन कराइबो। एंड जदि POPs होचे ना दैट विल लीड टू व्हाट बायो मैग्निफिकेशन, दैट विल लीड टू व्हाट बायो मैग्निफिकेशन। ग्राउंड ओजोन इज बैड, अपर एटमॉस्फेरिक ओजोन इज गुड, राइट। ओके चलो ना स्टॉकहोम कन्वेंशन एबे देखो हाउ टू एलिमिनेट। जेतल तुम स्टॉकहोम कन्वेंशन देखुच बाय डिफॉल्ट तुम एठी देखुच कि मर्क्यूरी इज देयर, बट मर्क्यूरी कोठी थिला मिनामाता कन्वेंशन, मर्क्यूरी कोठी थिला मिनामाता कन्वेंशन। तो मर्क्यूरी जदि मिनामाता कन्वेंशन तले एठी तो आसीबोनी, देन मर्क्यूरी को एलिमिनेट कर दियो। देन डीडीटी तो समस्ते आमे जानते डीडीटी कंपलसरी समस्ते जानिथिबो कि जेतेबेले POPs आसे ना माइंड रे आगे आसे डीडीपी, आगे आसे कोन डीडीटी, सॉरी डीडीटी, हा कि नहीं ना मते को ताले वेदर ABCD इज करेक्ट और ABC और AB। तो ऑप्शन मु तुमको ऑप्शन जदि तमे कहिबो मु ऑप्शन दउछि, राइट। जदि तमे मते ऑप्शन कहिबो आई विल गिव यू ऑप्शन। ऑप्शन इज ABC, ऑप्शन इज ऑल, आउ गोटे ऑप्शन होछि तमरो एटा कहि परिबो, एटा कहि परिबो और A and D कोटा। आउ गोटे ऑप्शन देबी तमरो B and C ऑप्शन। ये क्वेश्चन पे ऑप्शन देइछि मु ABC गोटे देइछि, AD गोटे देइछि, ऑल गोटे देइछि, BC गोटे देइछि, कोटा करेक्ट को। ABC कहउछि महाकूर कहउछंती, लिटिल कहउछि ABC, समीर कहउछि 2 ओनली, शकुंतला is going for ABC and Satru is going for AB, Subhakant Sain is going for ABC, as the right answer is ABC because Mercury cancel ହେଇଯିବ ମିନାମାତା convention Japan, Mercury ମିନାମାତା convention and that is why ये जो Stockholm कोठी रहिछि तमरो Stockholm कोठी रहिछि किए कहइबो। So the Mercury is under मिनामाता convention रहिछि, right। The next one, which gases are associated with ozone layer depletion, ozone layer depletion। Again the option will be पुणी ऑप्शन दउछि मु, ऑप्शन फटाफट दउछि 5 नंबर ऑप्शन दउछि। ऑप्शन इज ऑप्शन A B C, ऑप्शन B C D, ऑप्शन C all, ऑप्शन D none। This is the option। Question number 5, स्विट्जरलैंड रे कुआडू आसिला स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्विट्जरलैंड रे कुआडू आसीबो हां स्वीडन बा स्वीडन स्विट्जरलैंड नो इट्स स्वीडन। स्विट्जरलैंड रे हितला बेसल कन्वेंशन, कोन हितला स्विट्जरलैंड रे बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन व्हाट दैट इज बेसल कन्वेंशन, सेटा को पुनी भाबीबनी से बेसल को पुनी ए करिवनी, बेसल कन्वेंशन राइट। बेसल नॉर्म्स जहाँ को कहवा आई वुड से बेटर टू से स्विट्जरलैंड रे बेसल नॉर्म्स रादर देन बेसल कन्वेंशन हेले उल्टा हिज आंसरटा बेसल नॉर्म्स कहबी मु।
again is ABC कहउचंती संगीता नाइक कहउचंती ABC and Sasmita is going for Misra is going for ABC. Subhakant is going for AB and Sakuntala is going for ABC. Sunita is going for ABC. Yes, so ABC is the trending one. The right answer is ABC. Why? Because carbon dioxide is not responsible for the ozone depletion. Ozone, that means jota tomorrow O3 rahiche upper atmosphere. So basically 15 to 35 of kilometer in the upper atmosphere is called as the ozone layer. And the ozone layer is the protective shield for the human beings. So otherwise, we human beings and the flora fauna would have been perished on the surface of the earth, right? And that is why this is fifth number is again correct answer. Many of you have given, right? Carbon dioxide, Sasmita Misra coach is what GHG is a greenhouse gas and that does not helps to deplete the ozone layer. तो सेथिपई एटा हबनी तो halogenated gas CS HFC हेले भी हबो जदि मु एठी आउ गोटे ऐड कर देबे ना HFC देन इट वुड बी ऑल वुड बी करेक्ट जदि मु एठी HFC ऐड कर दु ऑल करेक्ट हे जबो halogenated gas हे परे और नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड CFC जदि मु एठी HFC कर देबे से करेक्ट हे जबो सब करेक्ट हे जबो देन इट वुड बी ऑल करेक्ट ये तो तुम राइट नाउ नेक्स्ट आस थर्मल पावर प्लांट रु कोन एमिशन हेता है दिस वन ए यूपीएससी रे फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी तमे जदि देखिबो लास्ट 10 इयर्स रे एंड कम से कम 3 थर क्वेश्चन पचारथिबो रिपीटेड थर्मल पावर प्लांट गोटे एमिति क्वेश्चन प्रिलिम्स रे प्रत्येक वर्ष पचारिबो मेंस रे कोन एनर्जी वाला इशू को पळेबे मेंस रे एनर्जी देखो प्रिलिम्स रे पचारिबो थर्मल पावर प्लांट रो एमिशन कोन होची रिलेटेड फ्लाई एज गैसेस ऑल दैट स्टफ रिलेटेड टू द पोल्यूशन but when it comes to the mains they will certainly jumps to the energy security and energy diversification energy transmission part they will comes to that area what how the scenarios is going on how the what the repercussion will be felt by the what that is I would say the tariff is being imposed on us and India is also willing to buy the Russian what I would not say Russian the American oil and gases as the Ministry of Commerce is coming some but in the papers you might have gone through that the government of India also thinking to buy the oil and gases from the USA as well. Now comes to question number 6. So question number 6 I can see that many of you are coming with A and B. Sasmita Misra is going for all. My life styles and the fashion is going for D. Thavira Mahakur is going for 1 and 2 only. Sri is going for 1 and 2. 1 and 2 1 and 2 is majority is following 1 and 2 1 and 2 1 and 2 चलो फिर देखते हैं आंसर क्या होगा आंसर would be 1 and 2 yes correct answer would be 1 and 2 yes तो ऑप्शन 3 टा तमरो भूल हे जबो दैट मींस तमरो A will be the answer A will be the answer एठी लिखा है देखो they emit negligible amount of NOx ना they emit maximum one of the highest this is not negligible this is one of the highest एटा जो तमरो ये गलत अछि दिस इज नॉट नेग्लिजिबल करना साधारणतः थर्मल पावर प्लांट जोठी रहबो ना ये तो मेजर पोल्यूटेंट ये दीटा तो आगे आसीबो कोठू थर्मल पावर प्लांट रु SO2 NOx तो आसीबो ही आसीबो दिस इज नॉट नेग्लिजिबल आपको कैंसिल करो दिस इज ये गोटी मतलब हम के बहुत सारा अमाउंट आसीबो राइट इट वुड बी बहुत सारा आसीबो it would be high it would be what high तेणु करके गलत है and 1 and 2 is the correct answer so 1 and 2 would be correct so that is NOx emissions are significant not negligibles now which of the following are the secondary pollutant next question हमें देखिबा coal combustion हला माने significantly आसीबो and से area रो पूरा region will be highly polluted even there would be crop loss वगैरह भी देखा जिवो what there would be also crop loss okay don't worry next which of the following is a secondary pollutant mu kon कहली secondary pollutant when I say secondary pollutant जेतरा मु कहे secondary pollutant तार meaning कोन that means that
प्राइमरी पोल्यूटेंट आसिक एटमॉस्फेयर आउ का सहित कॉम्बिनेशन करी आउ गोटे पोल्यूटेंट कन्वर्ट हो और दोज पोल्यूटेंट इज फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर विथ कॉम्बिनेशन विथ अनदर पोल्यूटेंट अदर गैसेस माइट भी पारे पोल्यूटेंट जगह पोल्यूटेंट नबा गैसेस जगह गैसेस नबा सेकेंडरी चलो फिर देखो ऑप्शन देखो ऑप्शन जदि मु कहबो ऑप्शन मु दउची 1 मिनिट हाँ ऑप्शन दउची मु से कहछ सेकेंडरी ना तो मु देबी तुमरो ए बी सी डी राइट then BD and A C D A C D. Now you have to pick the pick it 7 नंबर जदि मु देखबी ADB बहुत जण दउची ADB तो जदि देखबी मु ADB तो ट्रेंड करूची राइट ऑप्शन टा भूल गेला कि रो ए ओ एटा बी कर दै छी यस ADB विल बी करेक्ट हां तो एटा भूल ऑप्शन है एज दिस वुड बी करेक्ट ADB विल बी करेक्ट कारण देखो दिस इज ए सल्फर डाइऑक्साइड जदि हम देखो प्राइमरी ADB दैट मींस व्हाट ताले हम कहो ओजोन दिस वुड बी एंड दिस वुड बी प्राइमरी ये कौन है तुम प्राइमरी पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड जदि हम देखो प्राइमरी पोल्यूटेंट है सो दैट वुड देखियो आंसर कौन अछि यस आंसर ADB करेक्ट व्हाट दिस इज प्राइमरी पोल्यूटेंट राइट बहुत बढ़िया आंसर दैछ तुम माने तो समस्ते दैछन करेक्ट आंसर ए थ्रू लास्ट टाइम ओपीएससी मध्ये क्वेश्चन पचारथिले लास्ट टाइम भी जदि तुम देखो ओपीएससी ए थ्रू क्वेश्चन पचारथिले प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट लास्ट टाइम भी पचारथिले सिंपल मु कहबी सेकेंडरी पोल्यूशन कोटा जोटा एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन हुए ओजोन एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन होची फोटोकेमिकल स्मोक अच्छा फोटोकेमिकल स्मोक जो लंडन रे फॉर्मेशन हेतला शायद तमरे जानिथिबो तापे कोन दरकार हाई पोल्यूशन हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी ये जो फोटोकेमिकल स्मोक ना दिस इज पॉइजनस स्मोक ये कोठी हेते इंडस्ट्रियल एरिया रे हेता विथ द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई पोल्यूटेंट्स जेतल रहइबो सेतल तुमको देखाचिबो दैट इज व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट ओजोन तो जानछि हम अपर एटमॉस्फेयर एंड ग्राउंड रे भी हे परिबो ओजोन दीटा अछि ग्राउंड रे जोटा हबो सेटा नोज को इरिटेंट हबो आई को इरिटेंट हबो स्किन को तमर डैमेज पहुंचेइबो next which of the following contributes to the that means Delhi's winter air pollution बहुत बढ़िया देखियो ऑप्शन रे ये जो 1 2 करके देइछि कि नहीं यदि 1 2 करके देइनी ताले मु ऑप्शन क्रिएट कर देबी तुम पई चलो Delhi's रो एयर पोल्यूशन पई मु ऑप्शन क्रिएट कर दउछि लेट मी क्रिएट द ऑप्शन हला ऑप्शन मु देइ दउछि ऑप्शन होछि A B C देखो एमती होची एक मिनट रो A B C ऑप्शन होची गोटे ऑप्शन होची A B C then B C D then all and fourth is none you have to pick this दिल्ली रे प्रत्येक वर्ष विंटर आसिले पोल्यूशन हुए कौन पाई यस बहुत बढ़िया आंसर अच्छा ऑल आंसर देखिबा मेजॉरिटी लक्ष्मी आल्सो जॉइनिंग मी मेजॉरिटी त माने कहछो ऑल इज द आंसर ना मेजॉरिटी कहया कथा ऑल इज द आंसर ऑल इज द आंसर मेजॉरिटी कहया कथा कि ऑल इज द आंसर देखो प्रथम कथा हला टेम्परेचर इन्वर्जन कोन बुझी परिबो टेम्परेचर इन्वर्जन कोन बुझी परिबो टेम्परेचर इन्वर्जन मींस व्हाट टेम्परेचर इन्वर्जन मींस ऊपरे तमर रहइबो वार्म एयर तळे रहइबो कोल्ड एयर
दिस कंडीशन को कहा जाए टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन. सो दिस वुड बी करेक्ट कारण विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन हम तो यहाँ करेक्ट. ये तो आम जाने क्रॉप रेजिडुअल बर्निंग हुए दिस इज करेक्ट. वेहिकुलर एमिशन दिस इज करेक्ट. ना डस्ट स्टॉर्म शीत दिन में डस्ट स्टॉर्म कुआडू आसो मत कह वर्षा दिन में हाँ जदि तुमको या ही था कि इंडस्ट्रियल आम कहवा कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होगा दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. बट देख समहाउ आपको मु मना भी करि परिबिनी कारण रिसर्च रे आसुची कि जो आमर राजस्थान रु जो दिल्ली रो पॉल्यूशन पई वन ऑफ द मेजर रीजन होची थार डेजर्ट कारण थार डेजर्ट रु डस्ट पार्टिकल्स गुड़ा आसिक दिल्ली रे पहुँचुची एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. बट साधारणतः विंटर डस्ट स्टॉर्म हबो नाही कारण विंटर होची काम कंडीशन. विंटर टा कोन काम कंडीशन बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर because of atmospheric high pressure will be there. So atmospheric high pressure, or I would say better to say atmospheric stability, better to say about atmospheric stability. And if atmospheric stability is there, so there would be no storm, there would be no storm, and that is why cancel. And ABC is the correct answer. ABC is the correct answer. Hey baby, clear everyone, right? Clear. 9 number question number 9. Question number 9. Consider the following regarding the eutrophication. ये तो OPSC or favorite questions. This is also favorite question, again related to the what? Pollution. Again related to the pollution. That could be groundwater pollution पचारि परे, air pollution पचारि परे. तो देखो pollution related question पढ़ी की जाओ. and आज मु कहली 110% गोटे question prelims रहिबो ही रहिबो, no doubt, because this is the pattern they have been asking the question. अस्मिता कहूँ सर डस्ट स्टॉर्म देखो डस्ट स्टॉर्म इन्फ्लुएंस करूची नो डाउट बट सेटा समर रे सेटा विंटर रे नुह सेटा समर रे कौन हम सेटा समर रे जो तुम डस्ट स्टॉर्म करूछ दैट वुड बी से तो विंटर कथा पचारि ना से कौन पचारि तुमको विंटर कथा कही से समर कथा कही कि जदि एटा समर ही था देन मु कही यस मार्च मास अप्रैल मास ही था ताले तुम लो प्रेशर एबे यार क्लारिफिकेशन जदि देबी मु तुमको देखौची आउ टिके तमन तो ज्योग्राफी पढ़ी थिबो मु टिके मु तमन को गोटे जस्ट ग्लिम्स दउची कि व्हाई नॉट काहे की हबो नाही. दिल्ली इज हियर, डेजर्ट इज हियर, तो मते को एठी जेतरा हाई प्रेशर रहउची विंड एम्ति केम्ति मूव करिवो, हाउ विंड विल मूव लाइक दिस. तो सन तो रहिची तमरो सदर्न हेमिस्फीयर रे ए तो विंड विल मूव लाइक दिस. विंड तो एमिति मूव करिवो, उल्टा केम्ति मूव करिवो, एम्ति त हेई परिबनी. बस खत्म. एबे तम माने बुझी परथो मते कहया पड़िबनी ना बुझा पड़िबनी. डस्ट स्टॉर्म वुड बी रेस्पॉन्सिबल इन समर नॉट इन विंटर. बुझी पारो सस्मिता करेक्ट. now comes to the 9 one. Thavira Mahakund is going for 1 and 2. It leads to the alga blue. It reduce the dissolved oxygens in water. It increase the biodiversity in the water body. देखो now what is the reason for the eutrophication. जदि मु तुमको पचारिबी eutrophication समस्ते पढ़िथिबो. Eutrophied and eutrophication. Eutrophied is what? That is the state of water body. When I say eutrophied is the what? State. This is the state of a natural water body. Eutrophication is the process to become eutrophied. And when I say eutrophication, this one is correct, this one is correct, but increase, no, that will decrease, that will finish everything. And the BOD, that is BOD will increase, the BOD will increase. हाँ कि नहीं? BOD टा बढ़ियो कि नहीं? Dissolved oxygen demand, the biological oxygen demand will increase, that will be there. ये condition काहे की हुई? Because of organic compound. Because of what? Organic compound. Because of enrichment of water body. बहुत बढ़िया
कहीं हुए ध्यान से मन रख यूट्रोफिकेशन एथिपाई हुए बिकॉज ऑफ एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी मु तापई सेथिपाई कहितली गोटे होची यूट्रोफाइड लेक गोटे होची तमर मेजोफाइड मेजो लेक गोटे न्यूट्रिशन बेसिस रे तीन प्रकार लेक थाए गोटे होची तमर कौन ओलिगोट्रॉफी मु लिखि दउची गोटे होची ओलिगोट्रॉफी यूट्रॉफी मेजोट्रॉफी तो लेक को जदि आम कहबा ओलिगोट्रॉफी मेजोट्रॉफी राइट एंड यूट्रॉफी दिस इज द थ्री टाइप ऑफ लेक ये होची तीन टाइप रो लेक ओलिगोट्रॉफिक अर्थात न्यूट्रिशन नहीं मेजो अर्थात मीडियम यूट्रॉफी अर्थात एक्सेस न्यूट्रिएंट ये जो क्लासिफिकेशन है वाटर बॉडी को ओलिगोट्रॉफिक अर्थात मतलब लीस्ट आम कहबा कौन न्यूट्रिएंट एटा मीडियम यूट्रॉफी बारे बहुत सारा न्यूट्रिएंट अच्छी बस ताले मु जदि कहबी मु एठू गोटे क्वेश्चन पचारिबी चिलिका ताले मु जदि क्वेश्चन पचारि तुमको चिलिका इज व्हाट काइंड ऑफ वाटर बॉडी वेदर दिस इज यूट्रोफाइड वेदर दैट इज मेजो और दैट इज ओलिगोट्रॉफी मेजोट्रॉफी और यूट्रॉफी कौन कौन हम कह फटाफट कह आंसर तो ये तो जानी पार्छ आर आंसर आम देखी देचे दैट इज डन एंड डस्टेड मेजो बहुत बढ़िया सुजाता प्रधान कौन मेजो बहुत बढ़िया अच्छा ताले मते को ओलिगोट्रॉफी लेक कोठी देखा जाय इंडिया रे इंडिया गोटे जगह रे बहुत सारा ओलिगोट्रॉफी लेक देखा जाय व्हाट इज दैट की कहबो देखिबा कम कही मु ये कथा बारंबार कही कहीं आंसर आसुनी राजस्थान लद्दाख इज व्हाट लद्दाख देते बेले कौन सी अच्छा मते हुआ दल हो दैट मीन्स यूट्रोफाइड मीन्स व्हाट पूरा खत्म वाटर बॉडी मेजो अर्थात गोलिया टिके टिके थिबो जोटा पूरा क्रिस्टलाइन पूरा क्लीन वाटर बॉडी दैट इज द आम कहबा लद्दाख रे जेते लेक अछि चाहे से सो मरीर कथा नहीं जाओ चाहे से पैंगोंग सो कथा नहीं जाओ ये जेते लेक अच्छे लद्दाख रे दे आर प्रिस्टीन लेक पूरा क्लियर था दैट मीन्स इधर किछि नहीं सफा तो न्यूट्रिशन ही नहीं तो से घासो केमती हम दैट वुड बी लद्दाख यस बहुत बढ़िया आंसर देछि शुभकांत करेक्ट दैट वुड बी लद्दाख रे देखा जबो बुझी परियो कि ए कथा बहुत थोर मु कहि पढ़ई अच्छा the great London smoke in 1952 was pristine clear water body will be there in the Ladakh. The great smoke of London was primarily due to what? Dal Lake is not oligotrophic lake. Dal Lake and Ular Lake are not oligotrophy, they are mesotrophic. They are what? Mesotrophic to eutrophied. But I would say mesophyte. They are what? Mesophyte. Rasmi is coming with A, 10 number A. Nane A no. A combination. You have to find the combination. What is the combination? What will be the combination? Let me go for the combination. Answer move option douchi. Let me give the option. Whether that would be A, B, C or A, B, C, D or A, B, D or A, C, D. Now you have to pick. Now pick option. Now you have to pick the option. Now you have to pick the option. Whether A, B, C, D को option choose करो.
Aditya Pradhan is going for B. Sanu is going for A, B, C, D. All A, B, C. Kochi, Shubhakant, A, B, D is only. That is the Mahakur is going for A, B, D. Rasmi is going for the C. Susri Sangita Naik, all. Little Legend is going for ABC. Prakash is going for ABC. Lucky and Liku Naik also joining me. Sakuntala is going for D. D means what? A, B, D. Okay. चलो बहुत बढ़िया आंसर गुड आंसर इज कमिंग एटलीस्ट ट्राई तो करो एस आंसर वुड बी दिस वन आंसर वुड बी व्हाट सी ए बी डी सो दैट इज तो आंसर जदि आम देखा तो एथिरे बहुत सारा लोक मरी थे शायद बहुत कम लोग जानी द ग्रेट लंडन स्मोक दैट कॉज्ड एंड दैट किल्ड मेनी पीपल्स बहुत सारा लोक मरी द ग्रेट लंडन स्मोक रे कहीं बिकज ऑफ कोल बर्निंग सल्फर कंटेंट रहिबो तो कोल रे कोन थाए सल्फर कंटेंट जोटा हमें आउट के पूर्व देखिथिले दैट इज व्हाई टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन विल हैपेंस टेम्परेचर इन्वर्जन हेले देखो टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ मेजर रीजन फॉर द पॉल्यूशन सब बेले मन रखिबो सेथि पई शीत दिन आसिले पॉल्यूशन अधिक हुए लास्ट ईयर शायद तमने भूली जाइछो 2024 डिसेंबर it was probably December or January it would be 25 January 2 की 3 हबो मन नहीं मोरो इधर एई वर्ष January 6 की 7 हबो नले डिसेंबर लास्ट को हम देखिबा भुवनेश्वर वाज रैंक्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया शायद जानछो ए कथा तमने ना जाननो व्हाई because that is because due to the temperature inversion that because of what temperature inversion that is because of temperature inversion when temperature inversion happens that means warm air mass will be above the atmosphere and the cool air mass will be below tadra kon atmospheric stability and when atmospheric stability happens air mass jibo hi nahi se pollutant sethi hi rahibo wind speed rahiboni as the wind speed is not there the pollutant would not be dispersed and that would be the reason for the pollution. Yes, the Mahakur is saying car were very few in 1950 and vehicles emission is not a major cause. बहुत बढ़िया, good guess. तो महाकुर कहूची बहुत बढ़िया से आंसर कहउचंती कि सेतेबेले कार एते नथिला लंडन रे. This is not like a New Delhi शायद तो सेतेबेले एते नथिला कोल्स मट. So ABD is the correct. कार सेतेबेले केते थिला लंडन रे. London that was not that car or I would say the sea of car was not there. Now the sea of car is there in Delhi, Bombay, Bengaluru कथा नहीं जाओ Hyderabad कथा नहीं जाओ चले next questions 11 number questions come to 11 which of the pollutants are mainly associated with indoor air pollutions in the rural India easy questions. This one is easy one to pick, right? And I believe everybody would be happy with this. Let's see if I put the option. Let me put the option is like A, B, C, and go for the B. That would be B, C, D, C, A, C, and D will be there. D and all. Find the correct one. 11 number. Rasmi is going for A, Satru is going for A, Sasmita and Mudulu is also going for A. These are the questions that is to revise your what? Police and I would say better to say to police and revise the things. बहुत बढ़िया आंसर देते समझते सुजाता सस्मिता शुभकांत शकुंतला and Sunita Susri Shankita is there, Sanu is there, Sasmita Misra is also there, Rasmi Satru as usual everybody बहुत बढ़िया चलो फिर and Mahakur also saying ABC so ABC is the correct answer because ozone is not indoor ozone के भी indoor रे देखा गलानी मतलब अरे किसी जदी न भी जानी छ ना somebody is not aware with this भाई ओजोन के भी इंडोर देखा जाए इंडोर पोल्यूशन इज लार्जली व्हाट कार्बन मोनोक्साइड्स दैट वुड बी लार्जली कार्बन मोनोक्साइड लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड हां सेटा तुम कहि पर यस बट कार्बन डाइऑक्साइड को हमें पोल्यूटेंट रे नोना जीएचजी रे नहीं था
yes, polycyclics, aromatic hydrocarbons, PAPs देखा जो particulars matter 2.5 2.10 देखा जो that is also correct, but ओजोन तो upper atmosphere देखा जो नले बाहर देखा जो otherwise जोड़ी high temperature organic compounds are there सेठी देखा जो। चलो फिर नेक्स्ट आसीबा हमें 12 नंबर नॉइज पॉल्यूशन को नहीं की। Prakash also going for ABC. Yes, Sanu Aditya Pradhan also joining me. Now, consider the following statements about the noise pollutions. It is included under the Air Prevention and Controls of Pollution 1981. It can cause both what I would say psychological and physiological and psychological disorder. The permissible noise limit in residential areas during the daytime is 75 decibel. Here's a residential area. This is you need to be minded, right? Satru is going for D. Okay. ABC, ABC, ABC. Majority is going for the A, B, C. That is 1, 2, 3 is not there either. यदि हम देखा इधर देखो तुमको ऑप्शन इज देयर all majority is going for all. Rasmi is going for A. Sujata Pradhan is going for A. Sakuntala is going for A. Adityanath is going for A. जो मैंने A देइछो से मैंने correct आउ समस्ते भूल right. Those who are given A answer they are the correct. प्रथम कथा केमिति तमे D कहि देलो केमिति कहलो अरे जनरल सेंस लगाओ ना मो कहा था सब जिनस समस्ते जानते नहीं बट 75 डेसिबल इक्वल टू नॉइज एटा डेटा रेजिडेंटल एरिया इन रेजिडेंटल एरिया इट शुड बी बिलो 40 डेसिबल इट शुड बी व्हाट बिलो 40 डेसिबल एबव हेई परिबो नाही इट शुड बी बिलो 40 डेसिबल दैट इज आमे कहबा किंतु एटा इंडस्ट्रियल एरिया पई एटा होची तमर इंडस्ट्रियल एरिया पई एटा होची कोन इंडस्ट्रियल कारण आमे जो नॉर्मल कथा कोने दैट वुड बी 35 to 40 and 45 it would be like that मोर आवाज तो एमती टी कम थाए जनरली आमे कहबा तो इंडस्ट्रियल नाइट रे फेटा 40 नि आइते देखो साइलेंट एरिया जहा को कहबो राती रे जदी कोनोसी एरिया रे 40 डेसिबल रु कम नॉइज थाए ताको हम को साइलेंट एरिया राइट ताको हम साइलेंट एरिया बट साइलेंट एरिया रो जदी डेफिनेशन तमे जदी जोटा हमें कहबा एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 रे जदी देखिबो दैट वुड बी लाइक 10 डेसिबल दैट वुड बी लाइक 10 डेसिबल 10 डेसिबल मींस व्हाट द रस्टिंग साउंड ऑफ द dead leaves the dead leaves are rusting on the ground and that sound is what 5 to 10 decibel that would be 5 to 10 decibel will be there and that is why तो एटा को टिके ध्यान से देखो नॉइज केते बळे हुए 75 डेसिबल बस 70 साधारणतः 80 डेसिबल निया जाए व्हाट आई कैन रिकॉल इज दैट साधारणतः 80 डेसिबल निया जाए कि नॉइज मतलब कान फान खराब हो ता ऊपर को चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज हेवी मेटल्स कॉमनली फाउंड इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स चलो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स दैट मीन्स जो एफ्लुएंट्स गुड़ा आसुचे ए बी सी डी ऑप्शन जदि कहमु ऑप्शन दउची आई विल गिव ऑप्शन ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज as usual A B C second option is as usual A B D third is B C D fourth D is all now you have to pick तो सेटा एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना सॉरी मु भूल कह दीची सेटा मु 81 कह दीची कि प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट कह दीची ने कि ओके पार्डन मी ठीक अछि मते पार्डन कर दियो चला से तल देखिबा
Which of the following are the heavy metals commonly found in industrial effluents? Not chromium. Okay. नहीं सेटा बुझिपन इंडस्ट्रियल वे मतलब इफ आई से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स सेतरे बहुत प्रकार थाई पारे ना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स तो बहुत प्रकार हेई पारे तार किसी लिमिट अछि कि तार किसी लिमिट नहीं ना तार किसी भी लिमिट नहीं तो अप्लाई कर दियो ऑल ही जो अप्लाई इट ऑल मो कहे कथा इंडस्ट्रियल वेस्ट जेतरा आसुची बा एफ्लुएंट जेतरा आसुची सेतरे सोलार थाई पारे सेतरे मर्क्यूरी थाई पारे सेतरे हेवी मेटल्स बहुत प्रकार हेवी मेटल्स थाई पारे जहार हमें माने तमे जानि ही परिवन केते प्रकार थाई पारे तो टेक इट ऑल गो फॉर अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट ओके ठीक थिला ताले मु ताले तम माने तो मते शत्रु कहूँ कि सार नाई जोटा आपण कहते 1981 से ठीक थिला ओके ठीक थिला तो ओके डन ताले मते भी कंफ्यूज कर देल मु भाविली शायद मु भूल कहीदेली कि 81 अंडर आसूचे ना एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन 1981 दस ओके बहुत बढ़िया चलो ग्रेट ग्रेट Consider the following statements: carbon dioxide, ozone, benzene, black carbons. Which of them are classified as the short-lived? That means climate pollutant. हाँ देखी दियो है चलो फिर एटा देखो 14 सॉल्व करो 14 शॉर्ट लिफ्ट कही हाँ बहुत बढ़िया तो शुभकांत कौच ए रश्मि कौच ए Thavira Mahakut coach A, Sasmita Satru Samir, everybody is going for A. Both बढ़िया, great answer. A is the right answer. चलो, तो that is what benzene is not included, so A is the answer. Now comes to the 15. 30टा क्वेश्चन अच्छी जल्दी करिया पड़िवो आसो बहुत टाइम गला है ना टिके फास्ट ही जीवा सॉरी चलो consider the following statement: waste to energy plant emit that is what dioxins and furans. That is medical waste that is incinerations can release mercury. Plastic burning releases hydrochloric acids fumes. Correct कोटा से पचारिछ Question number 15. Question number 15. D कहुचे Satru. Sakuntala is going for D. Sunita is going for D. Lucky, Rasmi, Sasmita. Now everybody started following the D. Okay, बहुत बढ़िया चलो फिर बहुत बढ़िया so that is great that means answer would be D बहुत बढ़िया so this is the part of ये थिला तमरो pollution रो part now we will comes to the part of fauna एबे हमें fauna को जिबा एटा थिला pollution now we will comes to fauna part को आसीबा ए pollution वाला part थिला एबे fauna वाला part को आस
Which of the following are critically endangered species in India as per the IUCN? चलो फिर अच्छा ऑप्शन देवी कि ऑल ऑप्शन देवी ओके ऑप्शन देउछि हैला लेट मी गिव द ऑप्शन ए रे आम दबा ए बी सी एंड डी ऑल बी रे आम दबा ए सी डी सी रे आम दबा ए बी सी डी रे आम दबा नॉन ऑल नॉन ए बी सी ए सी डी मेजोरिटी कहउछन्ती ऑल मेजोरिटी तो ऑल आसुछि ना समस्त को जदि देखबी मु शत्रु रश्मि रंजन शिखा शुभकांत सुश्री सनु लिटिल लकी सुश्री शुभकांत एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ऑल बट एठी लिखा है इंडियन पैंगोलिन एंड दिस वुड नॉट पैंगोलिन टाको ध्यान से देखिलनी पैंगोलिन इज नॉट क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट मु देइथिली पैंगोलिन इज नॉट क्रिटिकल एंडेंजर्ड आर लिस्ट मध्य मु शेयर करथिली लिस्ट मध्य टेलीग्राम चैनल रे शेयर हिथला राइट आगे नहीं दिया ही नहीं तुम मन को दिस इज एंडेंजर्ड सो ये तार लिस्ट मु जोटा हमर टेलीग्राम चैनल रही ओएस मेंटर राइट कोथरे जॉइन करिवो ओएस मेंटर एथरे तुमको मिलिवो राइट सो आंसर टा मिल गला तुमको नाउ वी विल कम्स टू सेकंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेमिक टू इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडेमिक टू इंडिया एंडेमिक अर्थात बुझी पड़तो तो सेठी ही देखा जाए आउ कोठी देखा जाए नहीं चलो एंडेमिक टू इंडिया ध्यान से सुनिबो कौन कहली मु एंडेमिक टू इंडिया अर्थात इंडिया रे केवल देखा जाए आउ कोठी देखा जाए नहीं एंडेमिक र मीनिंग कौन केवल इंडिया रे देखा जाए आउ कोठी देखा जाए नहीं ताले ऑप्शन मु देबी ए बी सॉरी ए सी डी बी सी डी देइथिले हैला ए बी सी डी ए बी डी एंड ऑल इजी क्वेश्चन अच्छी ध्यान से करिवो इजी क्वेश्चन अच्छी भूल कर दबन बहुत बढ़िया रेड पांडा चाइना रे देखा जीवनी देखा जीवो ना जो तुमर रेड पांडा चाइना रे भी देखा जाई पारे रेड पांडा तो खाली इंडिया रे देखा जीवनी चाइना रे देखा जीवो दिस इज ओनली इंडिया कोठी देखा जीवो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सेठी सांगाई कोठी देखा जीवो ओनली इन इंडिया लोकतक मणिपुर नीलगिरी थार्स लायन टेल मकाओस कोठी देखा जो तुम वेस्टर्न घाट दिस इज वेस्टर्न घाट लायन टेल मकाओ वेस्टर्न घाट दिस इज ओनली इन इंडिया this one only in India this one only in India but this one China रे मध्ये देखा जाए and that is why answer would be ABT correct answer देइछ तम माने समझते now question number 3 project tiger बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट टाइगर को नहीं की जासी तो प्रोजेक्ट टाइगर कहा को कवर करूची चलो प्रोजेक्ट टाइगर एक मिनट देखिए क्वेश्चन आउ थे सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट सॉरी
प्रोजेक्ट एलिफेंट मु कहली यार ऑप्शन रे कोन लिखा हिचे एठी मु से देखिली मु कहली एठी कोन लिखे एलिफेंट अच्छा मु भूल कहि दैछि ओके देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलो ट्राई करो प्रकाश लिखुची प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 बहुत बढ़िया चलो फिर चल ट्राई करो दिस आर अप्लाइड पार्ट नीलगिरी थार तो जानछो तुमको नीलगिरी रीजन रे ही देखा जो वेस्टर्न घाट मीट करूची डोडाबेडा इज द हाईएस्ट रेंज and Nilgiri there is also Nilgiri grassland also there सेडे भी देखा जो grassland also there चलो तो ऑप्शन जदि मु देखिबी नीलगिरी दैट मींस इन नंबर डी कहउछ सुकांत इज गोइंग फॉर द डी मुदुली इज गोइंग फॉर ए 1 2 3 Susri is going for A, Sunita is going for C, Sakuntala is going for C, Rasmi D, Sasmita Mishra is going for all. So all is the correct answer. All is the correct answer. Yes, all is the correct answer. So D. So D is the correct answer. The right answer is D. Little is going for the D. Susri Sangita is also going for the D. Sunita Prakash. So this is the correct answer. This is applied part. Applied part कौन? Poaching obviously that will restrict the poaching or that will but try to reduce the poaching. Ensuring the ecological viability of elephant, no doubt that would be correct. Facilitating human elephant conflict, that would be also. So all is the answer. चले sorry which of the following schedule 1 species under the Wildlife Protection Act not कही देखिए रो which of the following are कही अच्छा are कही नहीं कि ताले मो तो ऑप्शन आई हैव टू गिव द ऑप्शन all A B C B C D A and D now you have to pick easy one एटा ए आंसर करबो ए आंसर करो एटा जोटे दिया हिच यू हैव टू चूज फ्रॉम हियर जीबा ओके which of the following schedules schedule 1 तो तुम जानी छे हाउस स्पैरो इज वेरी कॉमन काऊ हे गेला अरे काऊ बग एमान को कोन हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 रे रखबा हाईएस्ट प्रोटेक्शन दबा की हाउस स्पैरो वुड नॉट बी गिवन का हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन विल गिवन टू स्नो लेपर्ड्स lions that means I would say your what deer macaw sangai tiger elephant cheetah these things vulture they will come under the what they would be chalo so that's a common the Gangetic river dolphin is threatened due to what जोटा वाइड स्प्रेड माने मतलब जोटा बहुत सारा अच्छी आमे कोन कॉमन क्रोटा को काउटा को कोन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल एक्ट 1 रे रखि देबा कि हमें
एटा देख एटा ऑप्शन देबी ना कर दे परिबो ऑप्शन देबी ए बी सी सेमती तो करबो कोन कोडा हबो को ऑप्शन रो को कोडा हबो एटा ऑल हबो ना ए बी सी हबो ना तुमर ए सी बी हबो ना ए बी हबो को और डी कोडा हबो को पिक गैंगेटिक डॉल्फिन यूपीएससी दी तीन थर क्वेश्चन पचार या नहीं यूपीएससी प्रिलिम्स रे ये क्वेश्चन दी थर आसी 2014 एंड 16 कि 13 ही एमती 13 रे बोधे आसला 2013 एंड 2016 और 15 से एमती बैक टू बैक आसला सेही टाइम रे लिलीमा महाकुंड आल्सो जॉइनिंग मी सो इट वुड बी ऑल राइट डैम कंस्ट्रक्शन हेले हबनी एटा को कहीं कैंसिल करूछ तुम माने ए को कहीं नौनो कौन पे डैम कंस्ट्रक्शन हेले वाटर लेवल कमी गले थ्रेटेंड हबनी ऑल हबो आंसर वुड बी ऑल इट शुड बी ऑल इट शुड बी ऑल क्या जिते डैम कंस्ट्रक्शन होची मो कहा कथा सुनो जिते डैम कंस्ट्रक्शन होची ता द्वारा कौन वाटर लेवल कमी जिवो as the water level reduces so that will also threaten this species water level कमी जिवो ना then which of the following species are listed in the sites appendix 1 sites appendix 1 गैंगेटिक डॉल्फिन इज एंडेंजर्ड विक्रमशिला सेंचुरी रही दरभंगा रे गैंगेटिक डॉल्फिन को ऊपर मुझे फटाफट कही दूची यार आखि नहीं ये देखी पारे नहीं दिस इज ए ब्लाइंड डॉल्फिन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ शिशु बोली ताकू कहुए द नेशनल एक्वेटिक एनिमल दिस इज व्हाट नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स एंड ये तुमको गंगा रे देखा जाए गंगार जिते ट्रिब्यूटरी देखा जाए अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मपुत्र मध्य देखा जाए दिस इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स गोटे सेंचुरी रही विक्रमशिला सेंचुरी इन द दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रही एंड यार कंजर्वेशन गवर्नमेंट बहुत फोकस करुच्ची एंड द पीपल पार्टिसिपेशन आपर दी थर क्वेश्चन पचार कि गैंगेटिक डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स कौन और ये तार जो ये हूँ प्रे तार जो ये हूँ प्रेडेटर ये हूँ कौन प्रेडेटर तार जो प्रे को धरे सोनार वेब छाड़ी को से धरी था चलो now 6 number question question number 6 sites international appendix 1 Indian star tortoise, Royal Bengal tiger, Indian pangolin, and olive ridley turtle. Lilima is going for all. Sasmita, Samir, Satru, Shikha, Sanu, Prashad. Everybody is going for now the all. So all should be answer. But B, C, 1 minute. आंसर तो गलत हो गया स्टार टोटोइस्ट नहीं अपेंडिक्स 2 रे अछि हो मते करेक्ट कर दियो ताले राइट तो दैट मींस अपेंडिक्स ये आसबो तमर बी एंड सी आसबो ऑल मु भाबली अप्लाइड कर दबो तो एटा सॉरी एटा जो कौन कहल टर्टल एंड टर्टोइज गुड़ा सेटा अपेंडिक्स 2 रे आसे जेते तमरो टर्टल एंड टर्टोइज गुड़ा अपेंडिक्स 2 रे आसे एटा करेक्ट कर दियो मते राइट एटा मते करेक्ट कर दियो बाकी ठीक अछि चलो नेक्स्ट मैच कर से करेक्ट कर दो है देखी दो अपेंडिक्स 1 रे किए किए अच्छी गोटे पढ़ी दे जीवो कने सेटा इंपोर्टेंट है अपेंडिक्स 1 रे जोटा अच्छी गोटे करेक्ट कर दे जीवो गोटे करेक्ट कर दे मते ओके चला
Consider the following species on their habitats. Hangul Dachingam National Parks देखा जो Sangais Kebulamjam National Parks, Lion-tailed macaw already हमें देखी है, Silent Valley National Parks, Western घाट देखा जो Wild ass Velavadar National Parks. तो देखिए हमें के करेक्ट आंसर दउछो. चलो बहुत बढ़िया चलो चलो आउ अच्छे केतेटा कहलो आउ 10 आउ 8टा क्वेश्चन अछि आउ 8टा क्वेश्चन अछि फटाफट सारीबा हमें 8 क्वेश्चंस मोर. Lilima is going for B, Susri is going for A, Susri Naik, Shikha is going for B, Satru is going for A, Sasmita Misra is going for A, Subhakant is going for D. Okay, chalo chalo देखो. Wild ass is not famous for the that is Velavadar National Parks, that is somewhere else. तो सेटा तुमको कोठी देखा जबो, that would be in the Gujarat Kutch region रे देखा जाओ. The wild ass is so famous in the Gujarat or Kutch region रे देखा जाओ, and that is where the statement 4 is wrong. As the statement 4 is wrong, 1, 2 and 3 is the correct, and that is why option 1 is the correct answer. This would be found in the Kutch region, and that is why. Now question number, which of the following are invasive alien fauna species in India? चलो 8 नंबर. एट नंबर ऑप्शन देबी, ऑप्शन जदि देबी 8 नंबर रो ट्राई कराबे. लास्ट आउ रही 5टा 6टा क्वेश्चन रही सार दबा. ABD, ACD, ABC and all. से कुछ एटा which of the following are invasive alien species in India. अच्छा so answer would be ABD. So answer would be what? ABD. ABD is given by Thabira Mahakur and Prakash, both has given have given, sorry, and Liku also, Liku Nahak also given ABD. So Smita is also going for the ABD. So जो one ABD they are the correct, right? Because that house gecko गुड़ा बुझी पड़ता था ये जो lizard type रो, so they are common to Southeast Asia में कोई परिवा. Sorry, which of the following vulture species found in India? बहुत बढ़िया. चलो भल्चर गोटे डाइवर्सिटी अच्छी कि नहीं, जमती टाइगर गोटे डाइवर्सिटी अच्छी, भल्चर निजर गोटे डाइवर्सिटी अच्छी. ये सब इंडिया रे देखा जाए, व्हाइट भी देखा जाए, इंडियन भल्चर देखा जाए, रेड हेडेड देखा जाए, ऑल एक्सक्लूड ऑल प्रेजेंट्स 3 क्रिटिकल एंडेंजर. बार ध्यान से सुनबो, ये भल्चर सब क्रिटिकल एंडेंजर काई कि हिची. पिला दिने हमें केते सागुणा देखिचे नडिया गछरे आसिक बसिबो ताकू गोडेइबा. हां, because of diclofenac. Because of what? Diclofenac. ता द्वारा कोन हैला, बायो मैग्निफिकेशन है कि मरि गेला. डाइक्लोफेनाक यूज करा गेला. काउ को आमे गोरु गाई को जेतरे रोग हैला इंजेक्शन देले डाइक्लोफेनाक ताकू खाई कि कारकारेस को खाई कि से मरि गेला.
10 number. Which of the following species are included into the National Aquatic Animals of India and the National Heritage Animals of India? आउटे पूर्व कही एटा कही परिबो एटा आउटी के पूर्व कहली नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स मु ऑलरेडी कही एंड से कही नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कोडा आसुची को एटा देखि को मु एटा कही परिबो दीटा नबो गोटे नबनी दीटा नबो दीटा को चूज करे पड़े यू हैव टू चूज टू इधर ए बी को जीवो नले बी सी को जीवो नले ए सी ए डी दीटा चूज करबो एटा दीटा कहिछ ना यू हैव टू पिक टू खाली गोटे नेले हबनी दीटा नबो पड़िबो ना देखो आमे नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑलरेडी मु कहितली गैंगेटिक डॉल्फिन तो ए तो समस्त जानि जाइछो ना आउ गोटे क्विक करो नेशनल हेरिटेज एनिमल्स कोटा यस प्रकाश राइट आंसर देछि शुभकांत राइट आंसर देछि दैट इज एलिफेंट तो नेशनल हेरिटेज एनिमल किए एलिफेंट नेशनल एक्वाटिक किए नेशनल बर्ड किए पिकॉक नेशनल बर्ड होची पिकॉक तो केमती तुम पिकॉक को नहीं जाउछ एथरे सी गोटे की ऐड कर देलानी केमती होबो सी हां केमती होबो एते दीटा कुहाई छी बा नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स हैला तमरो डॉल्फिन नेशनल हेरिटेज हैला एलिफेंट तो पिकॉक तो नेशनल बर्ड रे जीवो एठी तो बर्ड पचरा हेनी काहे कि हमें बर्ड आडकू जीवा काहे कि जीवा बुझी पाछो कि नहीं ये तो पिकअप तो नेशनल बर्ड से जीव अच्छा मते को ओडिसा रा ना आमे कहबा स्टेट एनिमल कोन ओडिसा रा स्टेट एनिमल्स ऑफ ओडिसा एनीवन स्टेट एनिमल ऑफ ओडिसा कोन स्टेट एनिमल ऑफ ओडिसा कौन एटा सांबर एटा कौन सांबर ब्लू जे जोटा हम कहूचे कौन एटा भदभदिया ना कौन ताकू कहते ब्लू जे जोटा ताकू हम कहूचे कौन स्टेट बर्ड्स ऑफ ओडिशा जोटा ब्लू जेटा ताकू कौन कहती ओडिया रे ब्लू जे जाको इंग्लिश रे कहती जोटा स्टेट बर्ड्स ऑफ ओडिशा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर्स होम्स टू एंडेमिक फौना आ चारटा क्वेश्चन अछि दिब्रु शाखा आसाम नॉकरेक मेघालय नीलगिरी तमिलनाडु सुंदरबन वेस्ट बंगाल से कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर्स होम टू एंडेमिक फौना ए बी सी डी एमती तुम ऑप्शन रे चलो तेहा संबलपुर रे कोनती तेहा लिलिमा कहछि संबलपुर रे ताकू तेहा कहती ओके भदभदिया ओके बाबू एटा ऑल केमती हबो आउ टिके देखो नीलगिरी रे कोन देखा जाय नीलगिरी तार एंडेमिक नॉकरेक रे रेड पांडा बट रेड पांडा इज नॉट एंडेमिक रेड पांडा सुंदरबन इज नॉट एंडेमिक रेड पांडा हाँ ये भी नॉकरेक हबो एंडेमिक एटा टिके जीवो बट एटा जीवनी कने फ्लाइंग स्क्विरल वगैरह टिके अछि तो ये दुई हम तले आंसर पुट बी ए एंड बी देखो आंसर ए एंड बी यस ए एंड बी हबो कना आउ टाइगर वगैरह तो चारियाडे देखा होची टाइगर तो एठी सब आडे देखा होची तो टाइगर को केमती हम नबा नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एनिमल्स ऑफ इंडिया एटा मैच करियर अछि तुमको गुजरात पई कोन मिथुन अरुणाचल प्रदेश देछि इंडियन बाइसन गोवा पई देछि वन हर राइनो आसाम पई देछि कोटा ठीक अछि को यांक भीतर कोटा ठीक केतेटा ठीक अछि यांक भीतर केतेटा ठीक अछि को आपरे 3-4टा क्वेश्चन अछि फटाफट सार देबा ये अंक भीतर केतेटा ठीक अछि को ऑल अछि ना दीटा अछि ना तीनटा अछि ना गोटे अछि कोन केतेटा को
बी सी डी चलो Lilima Mahakul is going for B, C, D. Sunita Baral is going for A, C. Satru is going for all. Thavira is going for all. All is the correct answer. Yes, right. All is the correct answer. All is the correct answer. एटा मन रखी एटा पचारि पारे तुमको इंडियन बाइसन गोवा पई 100 आसाम रे देखा जाए मिथुन इज अरुणाचल प्रदेश एंड दिस वन इज व्हाट एशियाटिक लाइन गुजरात इतो जानछो तमे ना कम्स टू द दिस वन 13 नंबर क्वेश्चन Olive Ridley turtle. Which of the following are the threat to the olive Ridley turtles? Okay, chalo. Which of the following threat to olive Ridley turtle? Eta dekho easy questions. Easy question, applied based question. Applied questions. Trawling, fishing हेजिवो, egg poaching हेजिवो, coastal development, climate change सब तो जीवो कोन एटा भाबियार अछि कोन एटा तो applied question ना applied question means pick go for all. The last two question. The last two question. Last two. Last two. Yes, देखिए आंसर कौन आछि 14 नंबर क्वेश्चन को 14 रो आसिनी नहीं कि ओके द लास्ट टू क्वेश्चन which of the following true regarding the schedule VI species of the Wildlife Protection Act 1972 it includes the plants that are prohibited from the cultivations IUCN red list categories basis for the schedule VI listing then bedoms that is cicads and blue vanda are examples. So 14C जदि देखबा लिलिमा को 14C Sikha is going for the C, Sasmita is going for C, Rasmi is going for A and Satru is question mark, C is going for majority is going for the C is answer right बहुत बढ़िया. And the last जो तमरा VI टा जोटा रही छे ना VI is what VI रे basically आमे कोन करू तो that is for the plants, that is basically what for the plants, that is basically आमे plants पे रखी छे, this is dedicated for the plants. The last one answer तो देखि देलो last which of the following species are found in India and Sri Lanka. India and Sri Lanka रे कोटा देखा जाए लास्ट क्वेश्चन पीडीएफ तुमको कोठी मिलिबो वेस मेंटर चैनल रे तुमको मिलिजो टेलीग्राम चैनल जॉइन माय पर्सनल चैनल दैट इज वेस मेंटर अगेन आई रिपीट वेस मेंटर. Last question number 15. Last but not the least, question number 15. देखिबा कौन आंसर आछि A, C, D and the last and the end. Today's पई आज सेशन एथिक रहिबो.
tomorrow I will have again environments tomorrow मध्य नहीं कि आसीबी काली मध्य environment session नहीं कि आसीबी बट काली रो जो सेशन रहिबो एक्ट्स उपरे पॉलिसी उपरे स्कीम उपरे ता उपरे क्वेश्चन नहीं कि आसीबी काली जो environment क्वेश्चन नहीं कि आसीबी कन्वेंशन प्रोटोकॉल स्कीम एक्ट या ऊपर नहीं कि आसीबी राइट दैट विल बी देयर मु अगेन कहूची काली एनवायरनमेंट जो सेशन नहीं कि आसीबी सेथरे कोन रहइबो एक्ट पॉलिसी कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स आकु नहीं कि क्वेश्चन रहइबो मोर देन 25 to 30 क्वेश्चन रहइबो राइट and this kind of session will definitely help you for the prelims mu कहूची honestly this will help you in the prelims no doubt this will help you in the prelims राइट एंड काली मध्य नहीं कि आसबी बहुत बढ़िया सेशन नहीं कि आसबी गजब वाला सेशन नहीं कि आसबी एक्ट एंड पॉलिसी खत्म कर देबी काली एंड दिस पीडीएफ यू विल गेट वेयर ओएस मेंटर OAS मेंटर टेलीग्राम चैनल join there and get the PDF. Thank you everyone. Good night to all. See you there tomorrow, same time, same platform, the same person. Thank you all.